सो आज क्लास रे हमें सीपीयू और मेमोरी मैनेजमेंट केमती डॉकर रे करबा राइट ता ऊपर फोकस करबा तो मोस्टली हमें जतो एप्लीकेशन गोटे रन करूचे राइट तो एप्लीकेशन जहां भी हमें रन करछे से कोन करछे ना बैकएंड रे तर कंप्यूट पावर जो आप सर्वर रे रन होची राइट से सर्वर रे कंप्यूट पावर से यूज करूची राइट तो कंप्यूट पावर कोन हो ना हमर सीपीयू और मेमोरी राइट जोटा हम RAM कहूचे रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट मेमोरी केते यूज करची तो सीपीयू पावर टा कोन यूज करची तार विषय हमें जानिबा डॉकर तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस सीपीयू एंड मेमोरी पावर इन डॉकर सो जितबले हम सीपीयू फर्स्ट चेक करबा राइट तो सीपीयू रे कोन अछि तार जो कमांड्स रहउची बहुत सिंपल कमांड तो ये जो डिटेल्स हमें देखिबा एटा मोस्टली हमें करना नेटवर्क ट्रबल शूटिंग पार्ट रे यूज हुए राइट तो बेसिकली मो बहुत सारा ट्रबल शूटिंग कमांड्स जेमति बतैतली कोन डॉकर लॉग्स डॉकर एक्सिक डॉकर हिस्ट्री राइट ई सब कमांड्स विषय हमें डॉकर हिस्ट्री ऊपर आवरी जानिबा डॉकर लॉग्स विषय जानतले लॉग्स चेक करिया पई कंटेनर लॉग्स चेक करिया पई राइट डॉकर कंटेनर लॉग्स डॉकर कंटेनर एक्सिक टू गो इनसाइड द रनिंग कंटेनर किसी भी ट्रबल शूट करिया अछि तो सेही टाइप रो किछि मेमोरी बा सीपीयू रिलेटेड ट्रबल शूटिंग करिया अछि बा असाइन करिया अछि देन हमें कोन कर परिबा ना यूज करबा डॉकर स्टैट्स कमांड एंड देन कंटेनर आईडी ओके सो डॉकर स्टैट्स कोन करबा द स्टैटिस्टिक जो कंटेनर आईडी दबा तारा कंप्लीट रिपोर्ट ता तम शो करबो ओके तो फर्स्ट थिंग इज सेम धरो मो अपाची सर्वर गुटे रन करूची राइट तो कोन हो डॉकर कंटेनर रन राइट सो -d सो काई कि हमें -d एटी यूज करछे सुबह काई कि एटी हमें -d यूज करछे why we are using -d here anyone else सर डिटैच मोड रन करे भाई to run the container in a detached mode ओके तो यदि हमें -d ऑप्शंस न दोचे तो बाय डिफॉल्ट कोन होची ना तो इंटरैक्टिव मोड रे रहबो जोटा कि हमर टर्मिनल सहित अटैच हेकी थिबो तो सेते कोन होची ना हमें सही टर्मिनल को आउ यूज कर परिबनी राइट तो हमें कोन आउडे न्यू टर्मिनल यूज करे ओपन करे पड़े यूज करे पड़े तो हमु जतबे टर्मिनल सहित अटैचमेंट दरकार नहीं तो हम हेटा -d ऑप्शंस बा -, डिटैच तमे जदि लिखिबो देन डिटैच मोड रे रन हबो राइट तापर जेतु एटा मु अपाची सर्वर रन कोची वेब सर्वर मु चाहूची तार पोर्ट तक हमें पब्लिश करबा पय तमे व्हाई डू यू पब्लिश द पोर्ट तो काहे की पोर्ट पब्लिश करियो कहबो के मुझे -p ऑप्शन लिखुची राइट -p 80:80 ए दिटा मते की एक्सप्लेन करियो लेट मी आस्क यू अनुपम -p to publish 8080 why we need to publish it गोटे होची तो सर वेब सर्वर पोर्ट नंबर बट आउट जोटा हम कंटेनर पोर्ट नंबर दो ठीक है तो कंटेनर पोर्ट नंबर एंड देन होस्ट पोर्ट नंबर तक कोन दी होस्ट पोर्ट ओके कंटेनर पोर्ट एंड होस्ट पोर्ट तो होस्ट पोर्ट हमें काहे की दरकार काहे की दउछे ना हमें कंटेनर को जो एक्सेस करिबा तो कंटेनर कोठी रन होची गोटे कोन कंप्लीटली कोन आइसोलेटेड हेगिरी सेपरेट गोटे कंटेनर वर्चुअल मशीन से रन होची तो ता से जो एप्लीकेशन ता कंटेनर भीतर से एप्लीकेशन को हमें कनेक्ट करबा को हेले तार जो पोर्ट नंबर ता सेटा हमें बाहर माने होस्ट पोर्ट सहित हम कोन पब्लिश करिया पड़े तो काहे करबा ना हमें डायरेक्टली कंटेनर जो एप्लीकेशन रन होची तो हमें ताको एक्सेस करि परिबा नाही फॉर दैट रीजन वी नीड टू पब्लिश द पोर्ट so that we can access the applications with whatever it is running so 80 कोन भाई ना 80 हला अपाची सर्वर रो जो httpd हमें यूज करिबा httpd ए अपाची सर्वर रो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर हला 80 तो कंटेनर पोर्ट डिफॉल्ट हबो जेतु कंटेनर भीतर एप्लीकेशन सर्वर रन होची वेब सर्वर हमें रन को अपाची सर्वर तर
80 रहिला तो सही 80 सेम 80 को मु कौन करछि ना होस्ट पोर्ट हिसाब रे भी नउछि तो मु जदी एटी डिफरेंट पोर्ट देबी ताले मते सही डिफरेंट पोर्ट यूज करिया पड़िबो एक्सेस करिया मु आज क्लास तुमको आउथर बतै देबी ठीक अछि तो लेट्स हिट एंटर से कौन कला व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द कंटेनर रन कमांड तामे तो गोटे कंटेनर रन करिबी तार बिहेवियर फर्स्ट बिहेवियर कोन से जो इमेज हमें पास करिबा राइट ए जो इमेज ता हमें देले एटा कोन इमेज नाटा तो ई इमेज ता कोन करिवो से लोकली कोन करिवो सर्च करिवो लोकली सर्च करिवो ना कोडी सर्च करिवो होस्ट मशीन रे जोटी डॉकर इंस्टॉल हेची राइट से होस्ट मशीन रे से सर्च करिवो what is this unable to find the image httpd latest so latest image कोन जदि हमें किछि स्पेसिफाई करूने राइट कोनसी टैग को वर्जन बा को टैग रो इमेज हमको दरकार देन बाय डिफॉल्ट से लेटेस्ट टैग सर्च करिवो जदि न पाउची राइट अनेबल टू लोकल फाइंड लोकली राइट जदि लोकली पाउनी देन से कोन करिवो ना पुल करिवो कोठी लाइब्रेरी जोटा डॉकर रजिस्ट्री ताम एठी केस रे कोन डॉकर हब जोटा के पब्लिक रजिस्ट्री से कोन करिवो पुल करिवो राइट पुल करिकरी कोन गला से इमेज को फर्स्ट डाउनलोड कला परे जाइकरी कंटेनर क्रिएट कला रहला कंटेनर आईडी तामे दि चेक करिबे डॉकर इमेज ls तो पर्टिकुलर इमेज अच्छी राइट समझे आते में चेक करिए कंटेनर डॉकर कंटेनर ls सॉरी डॉकर कंटेनर ls तो हमर कोन कंटेनर रन होची तो आर जो कंटेनर ls कमांड हम यूज कले तर आ गोटे सर्टर फॉर्म अच्छी जोटा कि हमें अलगा कमांड अच्छी डॉकर कमांड जोटा हमरो कहथिल जेंती प्रीवियस वर्जन रे ओल्डर वर्जन रे हमरो रन होची जोटा कि हमरो कोन डॉकर ps सेम थिंग डॉकर कंटेनर ls तमे चाहा तबो डॉकर ps तब बट डॉकर ps तमे दी ओल्डर वर्जन रे डॉकर कंटेनर ls मारिबो देन इट विल नॉट वर्क दिस इज एक्चुअली they have added into the newer versions latest versions of the docker okay so this was working the previous versions but still they have kept it in the newer version also theta ka command काम करछि but newer or older version रे कोडा docker ps but एटा हला docker container ls केवल newer version रे काम करियो ओके जमा कंफ्यूज होबनी जदी भी तमे इंटरव्यू दोछ राइट जो कंपनी दो से कंपनी माइट बी देयर यूजिंग द ओल्डर वर्जन ऑफ डॉकर तो से तुमको पचारिबे धर कमांड कहबा पई तो तमे जदी एटा कहलो मे बी जे इंटरव्यू नोची जदी अपडेटेड अप टू डेट नथिबो देन माइट गेट कंफ्यूज्ड तो तुम से एक्सप्लेन करि दबो तुमको इजीली राइट तो डॉकर पीएस यूज कर पाइबो डॉकर कंटेनर ls यूज कर पाइबो okay fine so this is not our topic now let's move on to the statistic जोटा कि docker stat ऊपर हमें कहउतली तुमको राइट so 30 सेकंड class okay तो कौन करबे से कमांड कोन यूज करबे हमें देखि दबा docker container कोन रन होची ए पर्टिकुलर कंटेनर टा रन होची राइट तो मु आर स्टैटिस्टिक्स चेक करिया भाई तो मु जदी यूज करबी docker कंटेनर का तमे डॉकर स्टैट्स भी खाली डायरेक्ट दे परियो जेमि कोदली प्रीवियस वर्जन बा ओल्डर वर्जन डॉकर है तमे यूज बट तमे जदी कंटेनर स्टैटिस्टिक्स चेक करिया चाहछो देन कंटेनर मैनेजमेंट कमांड तमे डेफिनेटली यूज करिवो तक देखे दोछ जदी हाइफन हेल्प हमें चेक करिबा राइट दैट देखो ए सब कमांड कोडी हमर मैनेजमेंट कमांड हैला कोन कंटेनर द कंटेनर कमांड विद इत्ती सारा सब कमांड हमें यूज करि परिबा तो ता भीतर गोटे रहउची कोन stats ro display a live stream of the container resource usage statistics जो live statistic था तुमको देखे राइट तो हमें कौन करिवा इजे docker container stats राइट देन container id बा container ना जदी मन रखछ दे दबो तुम container id मोर मन नहीं तो जदी हमें पुट्टी जे container id एटीएम को मिल जिवो जदी container id दबो जदी
जेहेतु एटा अल्फा न्यूमेरिक राइट मन रखियो तमे बहुत सारा कंटेनर पुन थरे लिस्ट करी ताको आनिया पड़ियो राइट जदि मने अछि तमरो कोन कंटेनर ना देन यू कैन गिव इट हियर इटसेल्फ तो देखो एटाला कोन जेमती आमे लिनक्स मशीन रे यूज करू कोन कमांड टॉप कमांड राइट अप टाइम टॉप लिनक्स कमांड जो जोतरे आमे सीपीयू यूसेज विषय जानिबा तो एटी हमरो सीपीयू देखो ए कंटेनर आईडी सीपीयू यूसेज होची राइट ए कंप्लीट डिटेल्स से लाइव स्ट्रीम देखो जी मेमोरी केते परसेंटेज यूज होची राइट आर कंप्लीट लाइव स्ट्रीम तुमको से देखो जी राइट तमे एटी कोन मारिया तुम कंट्रोल सी मारी के पळे आसले ओके सो बस रन होची तो एटी हमें डॉकर स्टार्ट मारी पाइबा तो हमें सही पर जदी देखिबा नो स्ट्रीम राइट केवल ऑल रनिंग कंटेनर चेक करे पे हाइफेन हाइफेन नो स्ट्रीम यूज कर पाइबो राइट ठीक अछि सेटा तो हमें जानिले स्टैटिस्टिक्स देखिले तार केते से कोन सीपीयू यूसेज करूची तो एक्चुअली सीपीयू मैनेजमेंट हमें कोन जानि छी कोन रिसोर्स मैनेजमेंट गोटे एडवांस्ड लाइक गोटे फीचर डॉकर जोथि पई एटा मोर पॉपुलर सो इट मैनेजेस द रिसोर्सेस केयरफुली राइट तो केमिति ना आमे जेति की सीपीयू असाइन करिबा जेति की मेमोरी असाइन करिबा सेही एप्लीकेशन से सेति की ही यूज करी नॉट मोर देन दैट देखो एबे वर्तमान हमर कोन होची धर मेमोरी हमर अछि 1 गीगाबाइट रो मेमोरी हमें गोटे मशीन नै छै राइट सेही मशीन जेतले कंटेनर गोटे रन होची तो कंटेनर कोन हो जे कंटेनर भीतर जो एप्लीकेशन रन होची से एप्लीकेशन कोन जेति की ताकू मेमोरी दरकार से सेति की मेमोरी 1 जीबी भितरे बिकॉज हमरो सिस्टम मेमोरी हला कोन होस्ट मेमोरी हला होस्ट मशीन मेमोरी हला 1 गीगाबाइट तो से अप टू 1 गीगाबाइट तो जेति की दरकार से नबो जदी तारो 0.5 गीगाबाइट दरकार हला कि 0.4 गीगाबाइट दरकार हला 400 एमबी 500 एमबी रो स्टोरेज दरकार हला देन से सेति की यूज करिवो बाकी अवेलेबल थी रिसोर्स माने बाकी मेमोरी अवेलेबल थी आ गोटे कंटेनर जति तमे रन करछ यूज करियो बट आमे समटाइम्स व्हाट वी नीड टू नो गिव ए थ्रेशोल्ड काइंड ऑफ थिंग लाइक लिमिट वी शुड सेट अप ए लिमिटेशंस जे ए एप्लीकेशन ता एति की लिमिट पर्यंत रन हो तो सेठी कोन करबो ना आमे गोटे लिमिट सेट करी तो ता पय आमे केमती सेट करबा ना कमांड यूज होची जेतोल तमे कंटेनर क्रिएट करिवे सेठी कोन कोन हाइफेन हाइफेन cpus इक्वल टू 0.5 त माने कोन जदी तमरो 1 सीपीयू अछि गोटे सीपीयू अछि 1 कोर सीपीयू देन से कोन सीपीयू रो 0.5% मीन 50% 0.5 हला 50% सीपीयू से यूज करिवो इट विल गारंटी द कंटेनर एट मोस्ट 50% मैक्सिमम 50% से यूज कर परिबो 0.5 टू 0.5 ताडो अधिक आइले से यूज करि परिबोनी क्रैश हो तुम जति की सेट करियो से जति यूज करियो ओके तो लिमिट द यूसेज तुम यदि मेमोरी यूसेज को लिमिट करिया पे चाहू छ देन तमे कोन हाइफेन एम यूज करिवो एटी हाइफेन हाइफेन सीपीयूस बा हाइफेन सी खाली यूज करले भी यूज कर परिबो एटी हाइफेन एम टू मेमोरी दर हमर 1 गीगाबाइट रे मेमोरी में अच्छी हमरो RAM अच्छी तो मु ताठू मु चाहू छी ए एप्लीकेशन सेते क्रिटिकल नुओ तो मु जदी गोटे पूरा छाड़ देबी याकू यदि पूरा 1 गीगाबाइट रो मेमोरी यूज कर दो देन हमर अदर एप्लीकेशंस जो रन तो अदर कंटेनर्स में रन हे परिबेनी क्रैश हो राइट स्लो ही जीवो परफॉर्मेंस तो से मु चाहू छी एटा अदर करी अछि माने बेसी इंपोर्टेंस नाही ये कंटेनर भाई कंटेनर जदी भी इंपोर्टेंस भी रहउची तो मैं चाहू छी आरी भीतर ही से एग्जीक्यूट करियो मोटे मैक्सिमम लिमिट सेट कर देली कोन हाइफेन m 512 MB देन इमेज ना सिंपल जो इमेज हमें वर्तमान एग्जीक्यूट करले जो कमांड हमें एग्जीक्यूट करले रन होवा पाई तो इटी खाली सिंपल हमें गोटे यूज कर दबा कोन हाइफेन
M M तो सपोज 200 MB तो आम कौन कर से 500 MB 512 देछि 200 MB तमाने ये सर्वर केवल 200 MB पर्यंत मेमोरी यूज करि परिबो ताटू लेस हले से यूज करि परिबो नाही तो ताटू अधिक हले से यूज करि परिबो नहीं अप टू 200 MB ओके हम सेट कर दले सो मेमोरी तुम जानला सेट करिवो तार स्वैप मेमोरी तुम चाहो जदी से कर हाइफेन मेमोरी हाइफेन स्वैप तुम यूज करिवो जदी स्वैप मेमोरी यूज कर परिवो तो आ गोटे अछि कोन डिस्प्ले द रनिंग प्रोसेसेस ऑफ ए कंटेनर तुम यदि रनिंग प्रोसेस गोटे कंटेनर चेक करिया को चाहो छ स्टैट्स हम यूज करतले राइट सेमते हम कोन कर परिबा यूज कर परिबा कोन टॉप तो हम जदी यूज करे डॉकर कंटेनर टॉप जदि हेल्प मार दो चेक कर दे देखो पड़ाला टॉप स्टैट्स देखले कौन डिस्प्ले लाइव स्ट्रीम सो टॉप कौन करिवो डिस्प्ले द रनिंग प्रोसेसेस ऑफ ए कंटेनर राइट डिस्प्ले रनिंग तो जदि टॉप मारुची सॉरी कंटेनर आईडी दो भूली गली कंटेनर नाटा दे दो वेब सर्वर देखो तो जहाँ भी रनिंग प्रोसेसेस रन होची तारी ऊपर देखेगा ता पीआईडी कौन राइट कौन प्रोसेस आईडी कौन तो कमांड कौन यूज होची राइट केबे स्टार्ट इतला टाइम ओटीटी टर्मिनल रन होची कंप्लीट डिटेल्स देखे देन ट्रबल शूटिंग करे पे किछि इश्यूज असला देन इट विल बी इजी and it will help you to troubleshoot the things तो हमें बाकी कमांड सब देखितले स्टॉप कमांड स्टार्ट कमांड रन कमांड आरएम कमांड डिस्टार्ट राइट ये सब देखो आ गोटे कंटेनर को जते हमें रीनेम करूचे तो हमें रीनेम कमांड यूज करि परिबा जहाँ भी सब कमांड्स अछि किछि किल करिया पे चाहूचे गोटे कंटेनर रन होची ताऊ चाहूचे तमे किल करिया पे फोर्सफुली राइट तमे किल कमांड यूज करि परिबा तो इंस्पेक्ट यूज ऑलरेडी देखि साची इंस्पेक्शन करिया पे राइट गोटे कंटेनर रन होची तार कंप्लीट इंफॉर्मेशंस तमे जदी चाहूचे जानिया पे देन तो आ गोटे एठी असला देखो एक्सपोर्ट ए कंटेनर्स फाइल सिस्टम एज ए टार आर्काइव तमे यदि किछि एक्सपोर्ट करबा कंटेनर सब जो फाइल सिस्टम यूज करूची ताको तमे यदि कंप्लीट करे कोन बैकअप नवा पे चाहूछ राइट तमे एक्सपोर्ट यूज करी की कंप्लीट डिटेल्स तमे हमें ऑलरेडी देखि जे सीपी यूज करी की राइट केमथि तमे सीपी यूज करी की कॉपी फाइल्स गोटे माने होस्ट मशीन रो कंटेनर भितर को फाइल कॉपी करिया पे लोकल फाइल सिस्टम रो कंटेनर को कॉपी करिया पे आ गोटे इंपोर्टेंट थिंग होची कोन तमे ई जो कमिट कमांड तुमको कमिट कमांड ऊपर पचारी परंती तो कमिट कमांड रो काम कोन होची क्रिएट ए न्यू इमेज फ्रॉम ए कंटेनर्स चेंजेस तमेने कोन समटाइम्स कोन होची ना हमें कंटेनर जेते बळे रन होची एक्चुअली दैट्स नॉट द राइट वे टू डू माने कोन होची हमें तो गोटे कंटेनर क्रिएट करूचे राइट तो मुझे बर्तमान तो मुझे बतौनी एटा जेतले हमें निजर इमेज बिल्ड करबा तापरे ई कमांड ऊपर मु तुमको एग्जांपल्स कोटे देबी ओके एटा हम खाली जानथाओ क्रिएट ए न्यू इमेज फ्रॉम ए कंटेनर्स चेंजेस ता माने कोन कंटेनर्स चेंजेस देखो बर्तमान हमर कोन गोटे कंटेनर रन होची राइट ए कंटेनर ता हमर रन होची तो ए कंटेनर जदि किछि चेंजेस करता माने कोन कंटेनर भितरे धर गोटे फाइल कॉपी कली बा गोटे छोटो किछि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देली बा गोटे किछि चेंजेस कर देली तो कौन एटा कंटेनर भीतर चेंजेस हला तो मु जदि कंटेनर को टर्मिनेट कर देली बा डिलीट कर देली से सब जहां भी चेंजेस अछि से कोन पळेबा रहिबनी कंटेनर भीतर जो चेंजेस कराइछि राइट तो ताक मु आउथरे नुवा कंटेनर क्रिएट करबी जो इमेज यूज करिछि से इमेज रे कोन पुनी सेही पुराना कंटेनर जहां भी क्रिएट करथली सेटा ही हबो नुवा जहां मु मॉडिफाई करछि कंटेनर भीतर को जाइगिर सेटा अवेलेबल हबनी तो से केस रे कोन करबो तमे यदि किछि मॉडिफाई करूछ कंटेनर भितरे देन तमे कमिट यूज करिकरी गोटे नुवा इमेज क्रिएट कर दबो तो से नुवा इमेज को तमे जत्ते बडी भी तमे यूज करबो तनो तमरो जहां मॉडिफाई करितलो कंटेनर सेही कंटेनर तुमको आउथरे मिल जो आर कंप्लीट एग्जांपल हमें देखिबा ठीक अछि फाइन नाउ लेट्स मूव ऑन तो मेमोरी और सीपीयू विषय जान लो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द नेटवर्क तो बर्तमान पर्यंत हमें नेटवर्क जानले जहां भी काम करतले कोन डिफॉल्ट नेटवर्क ऊपर काम करतले डिफॉल्ट नेटवर्क ऊपर
तो आम नेटवर्क देख सब सिंपल कमांड्स अच्छी नेटवर्क गोटे है मैनेजमेंट कमांड राइट आम जब डॉकर हेल्प मारिबा आम डॉकर कंटेनर कौन गोटे मैनेजमेंट कमांड आम देखी तो सेमती गोटे मैनेजमेंट कमांड भितर आसी कौन नेटवर्क वॉल्यूम भी गोटे मैनेजमेंट जो आम डॉकर वॉल्यूम पढ़ुले आ विषय जानिचे राइट तो नेटवर्क गला गोटे मैनेजमेंट टू मैनेज द नेटवर्क्स ओके सो जहां भी आम डॉकर बर्तमान पर्यटन काम कर सब जगह डिफॉल्ट नेटवर्क गोटे काम राइट तो आम चेक करवा डॉकर नेटवर्क मैनेजमेंट कमांड यूज करें नेटवर्क ls to list the networks right देखो ये सब नेटवर्क्स अवेलेबल अछि ब्रीज नेटवर्क्स होस्ट नेटवर्क्स नॉन नेटवर्क्स let me explain you about all these networks then आमे कोन करबा कमांड विषय रे जानिबा so networks so docker networking allows containers to communicate with each other and with external networks राइट तो आम जहाँ भी कंटेनर यूज कर डॉकर नेटवर्क्स बाय डिफॉल्ट कौन हो से कौन ब्रिज नेटवर्क यूज कर विषय बुझेबी तो डॉकर जो नेटवर्किंग कौन कह इट अलाउज कंटेनर्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर तो आम जो मल्टीपल कंटेनर्स यूज करवा राइट बा सिस्टम सहित से ऑटोमेटिकली कौन कंटेनर कम्युनिकेट करने राइट टू connect one container to another container or from host machine to the container तो हमको गोटे नेटवर्क दरकार राइट सो किसी गोटे एक्सटर्नल नेटवर्क सहित भी जदि हमें किसी गोटे सर्वर बा किसी गोटे एप्लीकेशन हमें रन करछे कंटेनर देन वी नीड द नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट ओके सो इट इज ए कोर कंपोनेंट इन कंटेनर orchestrations and microservices based application architecture जदि हमें किसी कंटेनर orchestrations करछे मल्टीपल कंटेनर रन करूछे राइट तो तापे हमको हमारा निजर नेटवर्क सेटअप करियो पड़िबो तो एबे हमें जिते पर हम सिंगल कंटेनर रन करथले तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड गो विथ योर इंडिविजुअल कंटेनर्स सॉरी इंडिविजुअल नेटवर्क्स क्योंकि जो होस्ट जो नेटवर्क अछि सेटा सफिशिएंट अछि हम पई हम एप्लीकेशंस रन हो पई देन इट्स ओके तो सेति पे हम कहै छी तुम डेवऑप्स रे चेक कोनसी नेटवर्क काम करछ फर्स्ट तुम अंडरस्टैंड माने बुझिबा को चेष्टा करिवा जे तुम रिक्वायरमेंट हिसाब रे तुम कोन दरकार रे कोन चाहूछ तुम जो कंटेनर रन कर देन जो गोटे मशीन तुमको दिया गला से मशीन तुम किसी कंटेनर रन करिवो एंड दैट शुड नो रन इंडिविजुअली अब तुमको किसी सेपरेट कंटेनर दरकार ना सॉरी सेपरेट नेटवर्क दरकार नहीं देन इट्स ओके यू कैन गो एंड रन द कंटेनर्स इन द डिफॉल्ट नेटवर्क किसी स्पेसिफिक नेटवर्क तुमको दरकार स्पेसिफिक एप्लीकेशंस रन होपई देन यू शुड गो एंड क्रिएट योर ओन नेटवर्क सो कौन कौन टाइप्स नेटवर्क रोच डॉकर रे टाइप्स ऑफ डॉकर नेटवर्क्स फर्स्ट लो ब्रीज नेटवर्क तुम क्वेश्चंस भी पचार पान व्हाट इज द ब्रीज नेटवर्क सो ब्रीज नेटवर्क इज द डिफॉल्ट नेटवर्क तो आम जो कमांड गोटे यूज कले राइट आम जो कमांड यूज कले कौन डॉकर नेटवर्क ls तो कौन कौन नेटवर्क देखला ब्रीज नेटवर्क राइट होस्ट नॉन ब्रीज होस्ट नॉन सो व्हाट आर दीस तो ब्रीज नेटवर्क होची कौन used when you don't specify a network तमे किसी नेटवर्क स्पेसिफाई करू न तमे जहां भी कमांड हमें एग्जीक्यूट करूचे कंटेनर क्रिएट करछे हमें नेटवर्क स्पेसिफाई करी नहीं तो बाय डिफॉल्ट कौन से ब्रीज नहीं होची सो used when you don't specify a network suitable for containers on the same host जब तमे सेम होस्ट रे रन करूचे कंटेनर then it is not necessary to specify your networks by default तुम्हें रन करो जो ब्रीज डिफॉल्ट नेटवर्क तो सिंपल अच्छी गल राइट तो नेटवर्क इंस्पेक्ट नेटवर्क कमांड विषय में जानिबा लीव इट तो होस्ट नेटवर्क कौन it removes network isolation between the container and the docker host the container uses the host's network directly the host जो नेटवर्क अच्छी डायरेक्ट तार नेटवर्क से रन करिवो कंटेनर नेटवर्क से आउ यूज हबन रिमूव्स द नेटवर्क आइसोलेशन बिटवीन द कंटेनर एंड द डॉकर होस्ट राइट तार देखो गोटे होस्ट गोटे जेकोनसी होस्ट मशीन्स गोटे सर्वर राइट मशीन माने गोटे सर्वर से सर्वर रे हमें कोन गोटे आईपी एड्रेस दिबो तार हमें तो गोटे कंटेनर क्रिएट करिवा the container will also have an IP address
राइट तार भी गोटे आईपी एड्रेस थी तो से आईपी एड्रेस होस्ट आईपी एड्रेस सहित केमती कनेक्ट करिवो राइट तो बेसिकली आम जो कंटेनर गोटे आम जो होस्ट रहा राइट होस्ट भितर आमर कौन आम कंटेनर रन करुचे तो ये मशीन आर गोटे आईपी एड्रेस रहिबो नेटवर्क आईडी नेटवर्क आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल रहिला आईपी एड्रेस राइट देन कंटेनर also will have one IP address right तो ये जिते बळे आमे गोटे कंटेनर क्रिएट करूचे जदि किछि स्पेसिफाई आमे यूज करूने देन आमे जानले कोन बाय डिफॉल्ट से कोन करबो ब्रिज नेटवर्क ता यूज कला जोटा कि हमरो कोन डिफॉल्ट नेटवर्क ब्रिज नेटवर्क हला हमरो डिफॉल्ट नेटवर्क तो होस्ट नेटवर्क आमे यदि यूज करिबा तो आ भीतर कोन बाय डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क माने कंटेनर जो रन होची से कौन करना होस्ट एटा हला कोन होस्ट आईपी तो ये होस्ट आईपी सहित ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए तो सेति पे हमें यदि होस्ट आईपी यूज करूचे गोटे कोन सर्वर को एक्सेस करिबा मोटा कंटेनर एप्लीकेशन को एक्सेस करिबा पई राइट तो ये कंटेनर को एक्सेस करिया पे हम कोन सपोज 10.12.13.45 सपोज होस्ट आईपी एड्रेस हमें ये आईपी एड्रेस देकी एप्लीकेशन यूज करिबा देन वी कैन डायरेक्टली access the applications if the port is published port जदि publish कराइछि then directly हमें access कर परिबा port number देकरी right तो हमें दी host network यूज करिबा ता माने कोन होबा ना आर जो कनेक्टिविटी बिटवीन द एप्लीकेशन होस्ट बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क कनेक्टिविटी को से कोन करिबो ना काटी दबो तो हमको बर्तन आर आउ कनेक्शंस किछि दरकार नहीं सो से कौन कहूची रिमूव्स नेटवर्क आइसोलेशंस बिटवीन द कंटेनर एंड द डॉकर होस्ट तो डॉकर होस्ट आउ कंटेनर जो नेटवर्क सेटअप था रिमूव्स नेटवर्क आइसोलेशंस एंड डॉकर होस्ट तो द डॉकर यूजेस होस्ट नेटवर्क डायरेक्टली तो हमें कौन होस्ट जो नेटवर्क रहिला से नेटवर्क को हमें डायरेक्टली सेटअप करना तो ये आईपी एड्रेस आसला कौन पाई जेहेतु कंटेनर गोटे सेपरेट नेटवर्क क्रिएट होची डॉकर क्रिएट कौन करची डॉकर कौन करची ना सेपरेट नेटवर्क क्रिएट करूची जोटे कि हमर ब्रिज नेटवर्क रहिला ता सहित हमर होस्ट नेटवर्क सहित कनेक्टिविटी होची तो होस्ट नेटवर्क जदि हम यूज करबा से कनेक्टिविटी आइसोलेट कर दो से ओके रिमूव्स द नेटवर्क आइसोलेशंस बिटवीन द कंटेनर्स ओके द नेक्स्ट असला नॉन तो नॉन जदि हम करचे कोन disables networking for a container used for security or debugging तो हमें चाहूचे हमर जो एप्लीकेशन रन होची ताको कोनोसी नेटवर्क दरकार नहीं कंप्लीट नेटवर्किंग से कंटेनर को से डिसेबल कर दवा तमे नॉन यूज करछो इटा हला डिफॉल्ट तमे तो डॉकर इंस्टॉल करछो हमें बाय डिफॉल्ट तीनटा कोन नेटवर्क क्रिएट हो जाउची गोडेला नॉन गोडेला होस्ट आ गोडेला ब्रिज नेटवर्क होस्ट नेटवर्क और नॉन नेटवर्क सो आउटर ओवरले नेटवर्क ये ओवरले नेटवर्क ता एक्चुअली जेतबे तमे गोटे निजर ऑर्केस्ट्रेशन सेटअप करूछ राइट ऑर्केस्ट्रेट करूछ बा निजर नेटवर्क तमे क्रिएट करूछ देन यू शुड गो विथ ओवरले नेटवर्क सो व्हाट इट डज enables communication between containers across multiple docker host जेतबे तमे ऑर्केस्ट्रेट करूछ ना तमे सिंगल सर्वर रे काम करिवनी बा सिंगल कंटेनर रे काम करिवनी त मल्टीपल कंटेनर मल्टीपल होस्ट रे काम करिवो तो सती में कोंदी ओवरले नेटवर्क तमे यूज करिवो सो आइडियल फॉर मल्टी होस्टिंग नेटवर्किंग तो जब दुई तीनटा सर्वर चारटा सर्वर रे तमरो कंटेनर सब आइसोलेटेड है कि कंटेनर सब कोन रन होजी माइक्रो सर्विसेज जेतबे तमे यूज करूछ सो इट इज सुइटेबल फॉर इन केस ऑफ माइक्रो सर्विसेज ओके तमे माइक्रो सर्विसेज जेतबे यूज करूछ सेही टाइम रे तमे ओवरले नेटवर्क यूज करिवो सेति पे तमे निजर नेटवर्क क्रिएट करिकि तमे यूज करिवो ओके सो यूज्ड विथ डॉकर स्वार्म जोटे कि हमें कुबरनेटिस रे भी पढिबा डॉकर स्वार्म हला गोटे काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म तो सेटा हमें डॉकर स्वार्म एटी यूज न करी हमें यूज करबा कुबरनेटिस ता विषय हम परे जानिबा आ गोटे मैक वीलान जोटे कि असाइन्स मैक एड्रेस टू ए कंटेनर तो ई सब कोन बेसिकली तुमको जो क्वेश्चंस आसीबो ओवरले नेटवर्क आ ब्रिज नेटवर्क डिफॉल्ट नेटवर्क कोन आ ओवरले नेटवर्क कोन
तो मन रखता डिफॉल्ट नेटवर्क तुम यदि किसी स्पेसिफाई गोटे सेम होस्ट रे तमे कंटेनर रन करूछ इटा हम डिफॉल्ट नेटवर्क गोटे ब्रिज नेटवर्क आ तुम यदि मल्टीपल होस्ट रे काम करूछ मल्टीपल कंटेनर्स देन इट शुड गो विथ ओवरले नेटवर्क सिंपल ओके तो कस्टम ब्रिज नेटवर्क आ गोटे कस्टम ब्रिज नेटवर्क जोटा कि तमे ओवरले नेटवर्क आम जान आ गोटे कस्टम ब्रिज नेटवर्क तमे निजे गोटे तैयारी करिवो जोटा कस्टम ब्रिज नेटवर्क यूजर डिफाइंड ब्रिज प्रोवाइड बेटर डीएनएस रिजोल्यूशंस बिटवीन कंटेनर्स जेतु तमे निजे देखो गोटे ऑलरेडी गोटे नेटवर्क अच्छी क्रिएटेड बाय द डॉकर आ गोटे तमे निजे क्रिएट करिवो तो निजे क्रिएट कला बेले सुविधा कोन ना तमे जानिबो तमरो पर्टिकुलर को होस्ट बा को कंटेनर को कौन नेटवर्क दरकार है तार आईपी एड्रेस तार कंप्लीट नेटवर्क एड्रेसेस तमे निजे सेटअप करिवो तो सिटी कोन होछ ना तमे प्रॉपर्ली तार रिकॉर्ड्स तमे मेंटेन करी रखि परिवो सेटअप करिवो सो यूजर डिफाइंड ता जो निजे क्रिएट करछो देन ता पई तमे कोन you should have good knowledge on the networking side right network side तमे sound knowledge भलो knowledge थिबा दरकार ओके तमे यूज कर परिबा तो ये सब सिंपल कमांड्स हमें यूज करबा डॉकर नेटवर्क एलएस ऑलरेडी मु देखि छी आ बाकी नेटवर्क क्रिएट करिया पई ई चार पांचटा कमांड अछि तमे यूज करबा डॉट नॉट सिंपल टू क्रिएट ए नेटवर्क डॉकर नेटवर्क क्रिएट नेटवर्क नेम हाउ कनेक्ट a container to a network जो कंटेनर रनर्स ते कंटेनर को तमे कनेक्ट करिवा पाई नेटवर्क सहित तमे कहबो डॉकर नेटवर्क कनेक्ट नेटवर्क नेम आ कंटेनर नेम डिस्कनेक्ट करिया पाई डॉकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट इंस्पेक्ट करिया पाई इंस्पेक्ट करिवो राइट सो लेट्स गो विथ दिस नेटवर्क कमांड राइट सो हमें कोन करिया हमें जानले डॉकर नेटवर्क एलएस चेक कले मु ब्रिज नेटवर्क डिटेल्स विषय जानिया पई मु कोन कर परिबी डॉकर नेटवर्क ओके इंस्पेक्ट ब्रिज ओके डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट ब्रिज तो ब्रिज नेटवर्क कंप्लीट नेटवर्क रो कोन कंटेनर आईडी कंटेनर डिटेल्स तार सबनेट कोन आईपी एड्रेस गेटवे ई सबला कोन नेटवर्क रो राइट ए पर्टिकुलर नेटवर्क रो गेटवे टा सबनेट कोन राइट आर कंप्लीट डिटेल्स देखौ राइट तो एठी हम कोन नेटवर्क विषय जानले राइट तो सेमति तमे आमेर स्पेसिफिक नेटवर्क आमे उडे क्रिएट करिबा स्पेसिफिक आर आईपी एड्रेस देखो 172.17.0.216 राइट सेमति धर मु गोटे हमर निजर नेटवर्क क्रिएट करिबा मु कोन करबी डॉकर नेटवर्क क्रिएट ओके सपोज माय नेटवर्क गोटे क्रिएट कर दला राइट तो मैं ठीक डॉकर नेटवर्क एलएस माय नेटवर्क ना हेला हैला एटा गोटे नेटवर्क आईडी ड्राइवर देखो ड्राइवर आमे किछ स्पेसिफाई करने तो बाय डिफॉल्ट कोन ब्रिज ड्राइवर से नहीं गला राइट तो देखो सब सिस्टम बा नेटवर्क रो गोटे ड्राइवर इंस्टॉल करियो पड़ियो राइट तुम जे कोनसी नेटवर्क यूज करछ जहार भी नेटवर्क यूज करछ तार ड्राइवर तुम इंस्टॉल करियो एटी बाय डिफॉल्ट अछि ब्रिज नेटवर्क तो ब्रिज नेटवर्क ता जोटा अछि तो से नहीं गला तो माय नेटवर्क मोर आर देखबी नई नेटवर्क आर देखबो गेटवे आईपी एड्रेस जो मास्क ता डिफरेंट थिबो राइट मु आपको इंस्पेक्ट करी बर्तन डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट सपोज आइदर तुम माय नेटवर्क देबो किबा नेटवर्क आईडी दबो राइट इंस्पेक्ट देखो एटी देखो आर गेटवे चेंज हेला राइट आर गेटवे चेंज हेला आर गेटवे 172.18.0.1 आर गेटवे कोन अछि 17 सॉरी आर कोन थला 18 आर अछि 17 राइट ए रेंज रे से जे 17 तो सही हिसाब रे ये नेला 18.01 आर सबनेट नहीं गला 18 राइट तो तार
तमे जहाँ भी सेट अप करछो इट शुड हैव सम knowledge, good strong knowledge in the network if you're going to set up your own network. नले तमे पूरा completely mess up कर दो कोनसी कंटेनर का सहित कनेक्ट हबनी राइट तो सब बेला हम नेटवर्क विषय में जानबे तो जदि भी नेटवर्क आमे यूज करूचे राइट ओके तो हमर कंटेनर रन होचे आमे देखिबा से कंटेनर ओके तो गोटे क्वेश्चंस पचाउछ तुमको धर हमर कंटेनर गोटे रन होचे मु जानि भी से कंटेनर टा को नेटवर्क को कनेक्ट हेछि मु केमति जानिबी धर हमर ए जो कंटेनर रन होची राइट मु जानबी को नेटवर्क को एटा को नेटवर्क रे एटा रन होची केमति जानबी तो मु ट्रबल शूट करया पड़ियो राइट किछ तरह इश्यू आसला को नेटवर्क एटा कनेक्ट हेछि तो केमति जानिबी ऑलरेडी हम यूज करछे से कमांड Sir, जल्दी inspect. exactly so we can use inspect okay docker container inspect हमें इसके और id तो हमें दी inspect कॉलिटी inspector कौन सी देखो इट हमें जस्ट वॉल्यूम इमेज जहाँ भी यूज करछि राइट होस्ट नेम कंप्लीट डिटेल्स राइट एठी भी से दैट हमें कोन कंप्लीट नेटवर्क डिटेल्स ता हमें आईपी एड्रेस नेटवर्क डिटेल्स हम पाई परिबा राइट जस्ट ऊपर जाउछि देखो एठी से यूज करछि कोन ड्राइवर ओवरले 2 यूज होछि बट हमर नेटवर्क्स जति हमें देखिबा स्टेट्स रनिंग नेटवर्क डिटेल्स कोडाला नेटवर्क मोड डिफॉल्ट नेटवर्क मोड एटी हमरो कोन डिफॉल्ट नेटवर्क यूज होछि हम सेट किछि करिने राइट नेटवर्क मोड डिफॉल्ट आ पोर्ट बाइंडिंग 80 आ होस्ट पोर्ट से हम जे पब्लिश करि छै 80 राइट -p देकरी त जी होस्ट पोर्ट ता हमर कंटेनर पोर्ट ता होस्ट पोर्ट सहित बाइंड कराइ छै राइट कंप्लीट डिटेल्स हम एटी पाइ जेबा जहाँ भी तमे चेक करियार अछि कंप्लीट एटा सिगला ड्राइवर कॉन्फ़िग कोन अछि एनवायरनमेंट वॉल्यूम्स नेटवर्क सेटिंग्स राइट तो नेटवर्क सेटिंग्स रा में एक पर्टिकुलर रा में पाइ जेबा नेटवर्क विषय रे राइट कोन पाइले एटी कोन नेटवर्क यूज अछि ब्रिज नेटवर्क राइट नेटवर्क आईडी एटा पर्टिकुलर ने राइट सैंडबॉक्स की सैंडबॉक्स आईडी एटा कोन नेटवर्क रो डिफॉल्ट होची तर आरो कंप्लीटली होस्ट आईपी कोन होची जेतु एटा लोकल होस्ट राइट कंटेनर पाइन तो एटा 000 कंप्लीटली 80 पोर्ट रे रन होची राइट देखो आर आईपी एड्रेस कार कंटेनर आईपी एड्रेस ए कंटेनर आईपी एड्रेस कोन होची 172.17.0.2 सेमती तो हमें आउ गोटे कंटेनर क्रिएट करबा तार आईपी एड्रेस हमर चेंज हेयो तो आउ गोटे वे रे तमे जल्दी आईपी एड्रेस देखि परिबो कोन ना इट इंस्पेक्ट कलो ग्रेप ओके -i कर दियो आईपी एड्रेस राइट तो एठी हमें कंप्लीट आईपी एड्रेस डिटेल्स पाइ छबा ए कंटेनर ए आईपी एड्रेस सपोज मु चाहूची आउ गोटे कंटेनर रन करबा ओके तो मु कोन कर परिबी आउ गोटे कंटेनर ठी रन कर docker container run okay hyphen name web server 1 दली okay तापरे hyphen name web server 1 suppose मु लागू कोन पब्लिश करबी -p 80:80 तुम जस्ट देखो छी कोन ऑलरेडी 80 रे गोटे रन होची म आउथरे 80 रन कले कोन होबो देखो तबरे इमेज ना दे देली httpd ओके httpd तठी कोन होबो अच्छा मु डिटैच मोड रे रन कर दो छी नले एठी पुनी -d डिटैच मोड रे रन कर फाइन देखो से कोन कहूची एरर रेस्पॉन्स आसी गला कोन कहूची driver failed programming external connectivity endpoint of web server 1 bind port is already allocated so port is already the host port is already allocated to 80 आमे जो ऑलरेडी हमर जो कंटेनर रन होची राइट से कंटेनर हमर ऑलरेडी allocated हे जाईची कोडा वेब सर्वर रे डॉकर कंटेनर आमे चेक कला बरे एठी कोन होची ना जेतु पोर्ट ऑलरेडी असाइन्ड हेची राइट पोर्ट ऑलरेडी अलोकेट हेची तो गण आ गुडे सेकंड कंटेनर आमे क्रिएट करि पारले
नहीं राइट सो ए केस रे कोन करिब एटा कोन ओडे कंटेनर जस्ट क्रिएट लिखला कोन क्रिएटेड बट आमे जे आउथरे चेक करिबा सेमथि क्रिएटेड एक रोची बट रन होनी ऑफ होनी राइट तो मु कोन कंटेनर को लेट मी डिलीट इट ओके सो मु कोन करिबे डॉकर कंटेनर rm कंटेनर आईडी नहीं गले राइट रिमूव कर देले राइट कंटेनर रिमूव हो गला तो बर्तमान मु जदी आउ गोटे कंटेनर क्रिएट करिवि तो मते कोन करिवो पड़िवो डिफरेंट पोर्ट दबो पड़िवो कोन पोर्ट देबी एठी धर सपोज मु दे देली 82 किबा 81 तम हिसाब रे चाबी पोर्ट दला कोन कंटेनर पोर्ट होस्ट पोर्ट 82 राइट एटा भूल देल छ हमर 82 होस्ट पोर्ट ता में दबा तापर कंटेनर पोर्ट ओके फर्स्ट होस्ट पोर्ट दो तापर कंटेनर पोर्ट दो तो मैं कौन करी गोटे कंटेनर पे क्रिएट हो जाइयो लेट्स डिलीट इट अगेन डॉकर rl ओके डॉकर कंटेनर rm मार परियो खाली डॉकर rm मारले भी डिलीट हो जो कंटेनर ओके डिलीट हो गला तो हमें कौन करबा ओके तो फर्स्ट हमें दबा कोन होस्ट पोर्ट 82 एटा हला कंटेनर पोर्ट मन रखता होस्ट पोर्ट कंटेनर पोर्ट ओके कंटेनर पोर्ट 80 ताको हमें चेंज कर परिबानी बट होस्ट पोर्ट हमें चेंज कर परिबा मतलब 82 देली वर्तमान ऑलरेडी हमें फर्स्ट कंटेनर हमर कोन ये जो कंटेनर ता रन होची ऑलरेडी 80 पोर्ट रे होस्ट पोर्ट 80 रे रन होची वर्तमान मु चेंज कर दले 82 हमर आउ गोटे कंटेनर क्रिएट हे जो ओके इफ आई डू दिस सी आउ गोटे कंटेनर क्रिएट हेला तो मु एबे जे चेक करबी देखो दीटा कंटेनर एटा गोटे दीटा कंटेनर क्रिएट हेला राइट एटा वन कंटेनर 82 आ गोटे 80 दीटा कंटेनर रन होची तो जो एप्लीकेशंस हमरो अच्छी सपोज मु गोटे जो इंडेक्स फाइल अच्छी हमरो धर मु कॉपी करिबे राइट इंडेक्स फाइल हमें कॉपी बर्तमान देखो दीटा का कंटेनर को जदी एक्सेस करिबी एबे दीटा का कंटेनर हमरो एक्सेस हे जिवो धर एटा गोटे हमरो आईपी एड्रेस हम देले तमे देखो एटी इट वर्क्स कोन कहला इट वर्क्स राइट एटा ला कोन 80 पोर्ट रे मु जदी 82 पोर्ट रे आ गोटे कंटेनर हमें रन कले राइट 82 पोर्ट रे आ गोटे कंटेनर हमें रन कले तो मु 82 पोर्ट रे से कंटेनर को आउते रन करिवि कोलन 82 देखिए कौन होची रन होची ना नहीं ओके एटा रन हबोनी काहे कि ना 82 जो हमें पोर्ट देले सेटा को हमें व्हाइट लिस्ट करिनी हमर जो सिक्योरिटी रोची राइट सिक्योरिटी ग्रुप रे हमको ऐड करिया पड़िबो राइट तो सिक्योरिटी सेक्शंस को हमें जदी जिबा ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी सेक्शंस को ये जो सिक्योरिटी अच्छे राइट सिक्योरिटी ग्रुप रे कोन 82 अच्छी कोन 82 नहीं राइट एडिट इनबाउंड रूल तो मोटे ऐड रूल करछि 82 दे दोछि 82 पब्लिक कर देली राइट सेव रूल्स चल रूल सेव हे गला तुम एटा को रिफ्रेश करिवे एबे देखो काम कला हम वर्तमान हमर कोन सेम एप्लीकेशंस बट दीटा कंटेनर रे रन होछि गोटे 80 पोर्ट रे रन होछि 82 पोर्ट रे रन होछि राइट तो जिते भी चाहे तमें कंटेनर तमें चाहो आउ गोटे कंटेनर क्रिएट करिया पई राइट सपोज मु एठी आउ दीटा खंडे पोर्ट ऐड कर दोछि सपोज आउ गोटे पोर्ट ऐड कर देली 82 बा 81 जहां भी तुम हिसाब से जहां भी पोर्ट नंबर दे देला गोटे सिलेक्ट हो गला डन सेव रूल्स ऐड कर देली 81 को दे ऐड व्हाइट लिस्ट कर देली तो मु आउ गोटे कंटेनर क्रिएट कर ओके आउ गोटे कंटेनर क्रिएट कर 81 एटी वेब सर्वर 1 अछि आ गोटे नाम चेंज कर दे सेम ना रे रन होबनी राइट हमरो आउ गोटे कंटेनर अभी क्रिएट हो गला राइट चेक करिबा
81 81 परफेक्ट तो तीनटा कंटेनर डिफरेंट पोर्ट रे रन होची 80 82 81 81 राइट तो वर्तमान मु जदी एठी रन करची राइट तो आमे कोन करबा ना सेही आईपी एड्रेस नै गली आउतरे तो एठी हम कोन करबी कोलन 81 81 देखो 81 81 हमर आउट एप्लीकेशंस तो ई हिसाब रे तमे कोन करबो ना मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर परिबो सेम एप्लीकेशन रे राइट तो एठी कोन होछ ना हम सेम एप्लीकेशन तीनटा कंटेनर रहउनो जदी गोटे भी कंटेनर डाउन हैला किछि हमरो फरक पडुनी काना ऑल एप्लीकेशन डाउन होछ तो बट गोटे प्रॉब्लम एठी कोन आसुछि ना हमें डिफरेंट कोन आईपी एड्रेस विथ डिफरेंट पोर्ट रे एक्सेस करूचे आईपी एड्रेस डिफरेंट पोर्ट रे हमें एक्सेस करछे ए जो पोर्ट रेजोल्यूशंस आईपी रेजोल्यूशंस ताको आदि हमें डोमेन नेम रे डीएनएस यूज करिबा देन कोन ताको यूज करा हमें कोन लोड बैलेंसर राइट तो दी लोड बैलेंसर यूज करिबा जहां भी डिफरेंट पोर्ट हमें यूज करछे डिफरेंट आईपी एड्रेस सहित एटा को हमें कोन करे लोड बैलेंसर हमें कनेक्ट कर दबा तो ऑटोमेटिकली हमें कोन गुट्टे डीएनएस यूज करी कि हमें से एप्लीकेशंस को यूज करि परिबा तो एटा हम कुबरनेटिस रे हमें देखिए केमती हमें ताको एक्सेस करिया ओके हमें आउरी भी लोड बैलेंसर पढिना हमें नेक्स्ट क्लास हमें लोड बैलेंसर ऊपर डिस्कशन करिबा